Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS इंडियन पॉलिटी की 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 42. सो इन दिस वी विल बी टेकिंग अनदर सेट ऑफ 20 क्वेश्चन एज हैज बीन आवर ट्रेडिशन. दिस इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट दैट वी आर टेकिंग across the slide for your self evaluation so that you could assess where do you stand in terms of knowledge in the Indian polity for the UPSC. Now first question of the day, consider the following pairs. यहाँ कुछ cities दी गई हैं, कुछ सिटी और कुछ हाई कोर्ट्स के नाम और उनके जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं. ठीक है, सॉरी, इधर जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं और यहाँ कुछ यूनियन टेरिटरीज या स्टेट दिए गए हैं. हमें करेक्टली मैच्ड ऑर्डर बताना है. ठीक है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान और निकोबार को भी कवर करता है, बिल्कुल करेक्ट. चंडीगढ़ हाई कोर्ट हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट. गुवाहाटी हाई कोर्ट, राइट. त्रिपुरा नहीं भाई, त्रिपुरा डज हैव अ सेपरेट इन 2013 त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्ट 1971 को अमेंड करके त्रिपुरा को एक सेपरेट हाई कोर्ट दे दिया गया है, दैट इज अगरतला. बॉम्बे, गोवा, बिल्कुल करेक्ट. सो 1, 2 and 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट स्टेटमेंट. 1, 2, 4 बी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म्स इनटू द सेंटर स्टेट रिलेशन? मंडल कमीशन, नो. रिजर्वेशन, कोठारी कमीशन, no. नानावती शाह, no. पुंची कमीशन, यस करेक्ट. दिस इज रिलेटेड विद द सेंटर स्टेट रिलेशन. डी लक्ष्मीकांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेंस के लिए बहुत रेलिवेंट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटर स्टेट काउंसिल. इंटर स्टेट काउंसिल 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और तीनों में से करेक्ट बताना है. इंटर स्टेट काउंसिल इज अ रिकमेंडरी बॉडी, करेक्ट. इट इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सच सब्जेक्ट इन विच सम और ऑल द स्टेट और द यूनियन एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट for better coordination of the policy action. That is exactly the purpose, right? Political heads of center and states sit together, that is chief minister and the prime minister, और वहाँ क्या होगा, जो भी common issues होंगे या policy matters जो होंगे वो discuss किए जाएंगे. Interstate council secretariat also works as secretariat of the, so this is also correct and hence 1, 2, 3 is going to be the right answer. The introduction of GST spurs reordering of the center स्टेट रिलेशन, बिल्कुल सही है. विद रेफरेंस टू दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट अगेन यहां भी दिए हुए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट. इन द जीएसटी रिजीम सोवरेनिटी ऑफ टैक्सेशन इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर स्टेट, दैट्स करेक्ट. ठीक है. जीएसटी काउंसिल व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर पासेज ऑफ जीएसटी इज एन एडवाइजरी बॉडी. नो, इट इज नॉट अ एडवाइजरी बॉडी, राइट. यहां ये जो भी रिकमेंडेशन देती है वो जीएसटी टैक्सेशन वगैरह के रिलेटेड, ठीक है, वो बिल्कुल रिकमेंड करने होते हैं. ठीक है, दिस इज ऑब्लिगेटरी नॉट एडवाइजरी. इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड द डेस्टिनेशन स्टेट हैज टू पुट द इंटरस्टेट टैक्स. इंटरस्टेट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आईजीएसटी के रूप में लिया जाता है एंड दिस विल बी कलेक्टेड, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर एंड नॉट द डेस्टिनेशन state. So that's incorrect, that is incorrect. Only first statement is correct, that is A. Certain bill has to be reserved for the consideration of the president by the governor. Article 201 आपको पता होगा. Which of the following grounds can be attributed for the such reservation? कौन कौन से मुद्दों पे? If the bill is passed by state legislature is of grave national importance. तो बिल्कुल इस केस में प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है गवर्नर ने बिल. For granting reservation to certain section of the people in the state, नहीं. इफ द बिल डील्स विद कंपल्सरी एक्विजिशन, बिल्कुल इस केसेस में अगेन प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करना हो. इफ द बिल डील्स विद मैटर्स पर्टेनिंग टू द लोकल बॉडी, नहीं, इस केस में डील करने रिजर्व करने की जरूरत नहीं. सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्राइब्यूनल्स. देयर वाज नो प्रोविजन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ द ट्राइब्यूनल, बिल्कुल करेक्ट है. आर्टिकल 323 A and B which deals with the tribunal was not part of Indian Constitution in 1950 when Constitution was actually operationalized. It was added, these amendments, right, A and B. Do you realize the importance of 3? As soon any alphabet is added to the article, you can easily consider that that particular alphabet has been, or that is actually amendment, that sub article is actually original article के साथ जब भी एक alphabet attach किया जाता है, so that is nothing, that sub article is nothing but an amendment. So
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैडम गांधी ने किया था, एंड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यू विल नोटिस दैट द प्रोविजंस ऑफ ट्राइब्यूनल और whatever provision related to the tribunals were added into Indian constitution. The tribunals are not courts of normal jurisdiction, but they have a specific and predefined work area. बिल्कुल correct है, absolutely correct, ठीक है. It is not like your session court or high court or supreme court which will have that civil and criminal jurisdiction. They are specified कि hey particular NGT you will be looking into the environment, hey particular SEBI, hey particular this, hey particular this, you will be looking into this area, your job is limited, competition commission. So these kind of things, right? So this is the thing. So second statement is also correct, first statement is also correct, and hence C is going to be the right answer because correct has been asked. Consider the following statement regarding Lok Adalat. 3 statement has been given and we have to tell the correct statement. It helps to settle disputes through conciliation and compromise. Absolutely correct. यही तो पर्पस है लोक अदालत का. द प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस एक्ट आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाइल असेसिंग द मेरिट ऑफ द क्लेम बाय द लोक अदालत. बिल्कुल करेक्ट है. देयर इज नो कोर्ट फी if the case is already filed in the regular court. The fee paid will be refunded if the dispute is settled at the Lok Adalat. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. So तीनों statements are correct. 1, 2, 3 is going to be the right statement. Which of the following are the major objective of NALSA? ठीक है, to provide free legal aid और सर्विसेज टू द एलिजिबल कैंडिडेट. बिल्कुल सही है. टू इंश्योर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ द केसेस. बिल्कुल सही है. टू रिकमेंड जुडिशियल ऑफिसर टू लोकल कोर्ट्स. बिल्कुल गलत है. नालसा का इसमें कोई रोल नहीं है इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द रिकमेंडेशन इन रिलेशन विद द जुडिशियल ऑफिसर. सो 1 and 2 is going to be the right answer, that is B. Consider the following statement with reference to the appropriation bill. We have 2 kind of bills in the budget, appropriation and then finance act. दोनों की बात इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे. The appropriation bill is intended to give authority to the government to incur expenditure from and out of the public accounts committee, public accounts of India. नहीं, consolidated fund of India से परमिशन के लिए लेना है. ठीक है, appropriation bill के थ्रू. ठीक है. While finance bill is a money bill, appropriation bill is not a money bill. It is actually a money bill. ठीक है. Both the bills, that is appropriation and finance, is actually a money bill. Correct बताना है. Neither 1 nor 2 is the correct statement. Which of the following statement is not correct with reference to the office of president? The president of India can be a naturalized citizen. Absolutely correct है ना. US में ये चीज़ applicable नहीं है. US में only the born people there in the USA can be their president. The election of the president is held in accordance with system of proportional representation by means of single transferable. बिल्कुल सही. The president can be re-elected to the office without any term. बिल्कुल सही. Again, that is a restriction into the USA. The oath of president is administered by outgoing president. This is incorrect. हमें not correct बताना है. The oath is administered by CGI, right? The serious fraud SFIO is a fraud investigative agency in the India. SFIO is involved in major frauds probes and the coordinating agency with the income tax department and the CBI. It is attached office under Ministry of, so it works or it is attached office under Ministry of Corporate Affairs. The Competition Commission of India, that is CCI, is responsible to prevent activities that have an appreciable adverse effect on competition. It was established as a statutory body. CCI 2002 में establish की गई है like a statutory body like NHRC. Consider the following statement with reference to anti-defection law. 2 statement has been given and we have to figure out which all statements are correct. The anti-defection laws were passed along with the Representation of Peoples Act and is included into the 10th schedule of our constitution. ये बिल्कुल incorrect है. Absolutely. Representation of Peoples Act 1951 में पास हुआ था. While this anti-defection जो कि 10th schedule में ऐड किया गया था, that was somewhere in 1986 after Rajiv Gandhi government got 416 humongous number of MPs into the Lok Sabha in sympathy wave aftermath of death of Indira Gandhi, right? So this is a wrong statement. Members who publicly opposes the party or states
or states his or support for another party would not be deemed to have resigned from his party and news report from the print media can never be used as evidence for this purpose। नहीं, एंटी डिफेक्शन का ये ग्राउंड हो सकता है अगर आप एमपी हो कांग्रेस के और आप दूसरे बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे जाते हो, बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स को सपोर्ट करते हो, ठीक है, उनके मुद्दों को सपोर्ट करते हो, पब्लिकली सपोर्ट करते हो, कभी कांग्रेस के पॉलिसीज़ को आप अपोज करते हो पब्लिकली, ठीक है, उनके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, कैंपेनिंग करते हो, सो दीज कैन बी टेकन एज अ ग्राउंड फॉर एंटी डिफेक्शन, ठीक है। So this is incorrect statement again. So both the statements are incorrect. हमें correct बताना है. So D is going to be the right statement, right answer. Which of the following statement is not correct with reference to the office of profit? The term of office of profit has not been defined into the Indian Constitution. Absolutely correct. हमें not correct बताना है. It seeks to enforce principles of separation of power between legislative. बिल्कुल सही. अगर आप इस concept को नहीं जानते office of profit, आप लोग office of profit utilitarian IAS YouTube में टाइप कर सकते हैं। आपको 32 मिनट्स का वीडियो मिलेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी एक्सटेंसिवली, काफ़ी इन डेप्थ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे ये सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करता है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके मेंस में बहुत काम आते हैं, है ना। इट इज़ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन और दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट विल बी आस्क्ड इनटू द मेंस, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। एनी वायलेशन इन टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एट्रैक्ट्स डिसमिशल of entire assembly और लोक सभा as the case may be। this is incorrect actually, ठीक है। अगर एक मेंबर ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वायलेशन किया है, that person, that MLA or MP, whatever post that he or she is holding, right, he or she is going to lose whatever, like if he has been made minister, cabinet minister or deputy minister or whatever, right, he or she is going to lose her job, right, not the entire Lok Sabha or assembly is going to be dissolved। so this is an incorrect statement। Yet will, although we have got our answer in form of C, yet we will be reading the fourth statement as well। A lawmaker holding the government position cannot be disqualified if the office of profit has been made immune from the disqualification by a। तो बिल्कुल करेक्ट है ना। अगर आप कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड कर रहे हो कोई, बट अगर वो पोजीशन जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इम्यून बना दिया गया बाय ए लॉ, राइट, देन आपको रिजाइन करने की, आपका डिसमिसल नहीं होगा। डी इज द, सॉरी, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज मोर डिस्क्रिशनरी पावर देन द प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पावर को ऑफन कंपेयर किया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नर डज हैव मच मोर सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास बहुत कम सिचुएशनल, रादर ना के बराबर सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। ही डज हैव, ही और शी डज हैव मोर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, बट दैट इज not the case with the governor। governor does have both situational as well as constitutional discretion, ठीक है। so this statement happens to be correct। हमें correct ही बताना है। the governor is the chancellor of university in the state and he she appoints the vice chancellor in various university in the state। that's correct, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इनके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है। state, even if it is state, a central university is located into a state, ठीक है, तो governor will actually be vice chancellor, president will be चांसलर, बट ये ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक के कारण हम इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को रॉन्ग नहीं करेंगे। बोथ द स्टेटमेंट हैपन्स टू बी करेक्ट एंड हेंस सी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तवांग आपके अरुणाचल प्रदेश, हिमीज नेशनल पार्क भी है, कश्मीर एंड नामग्याल हिमाचल प्रदेश। तीनों स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट हैज बीन गिवन एंड हमें करेक्ट बताना है। इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है। Jhum, the local term used for shifting cultivation, is widely practiced among the tribal groups of AP। that's correct। Due to rugged topography, the state is void of railway। नहीं, अरुणाचल प्रदेश is equipped with various kind of railways lines। so 1 and 2 is going to be the correct answer। B is the right answer। Consider the following statement with reference to Rajya Sabha election। 3 statement has been given, we have to tell which of the above is not
or is or are not correct. Member of Rajya Sabha are not elected by the people directly, बिल्कुल सही, but indirectly by all members of state legislature from various state. By all members नहीं भाई, from that particular state, the concerned respective state legislature से, जिस भी स्टेट से राज्य सभा मेंबर चूज होके आने हैं उस इलेक्शन में सिर्फ उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, नॉट द ऑल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल मेंबर्स, ठीक है, दिस statement is going to be incorrect. Rajya Sabha is a permanent body and so it cannot be dissolved. This is correct. There is a domicile requirement for a person contesting for Rajya Sabha. No, this provision was working until 2003, but this has been done away by bringing a law. ठीक है, so this is also incorrect. ठीक है, so first and third statement is not correct. हमें not correct बताना है and hence C is going to be the right answer. The Speaker of Lok Sabha derives his or her power and duties from which of the following sources? Parliamentary convention, yes. The rules and procedure and the conduct of business of the Lok Sabha, bilkul sahi. The constitution, yes. So all of above are the actually sources to describe or from where speaker is driving his power, authority or whatever duties, right? Last question of the day. Consider the following statement with reference to no confidence motion and censure motion. क्या फर्क होता है और हमें करेक्ट बताना है no confidence motion में और censure motion में. Censure motion may need to state the reasons for the adoption, while no confidence motion may not be required. बिल्कुल सही. No confidence motion need not to state the reasons because it is clearly stated that if no confidence is being brought, right, the purpose is to show that the actually legislatures does not have confidence into the current dispensation, current regime, current government, right? Voting will be done and if the no confidence motion, right, if the opposition wins, then government will have to go, but that is not the case. Censure motion में आपको जो भी resolution move कर रहा है, जो भी party, जो भी individual, they will have to state the reason. ठीक है, so this statement happens to no confidence motion may lead to compulsory resignation of council of minister, whereas censure is meant to show disapproval and does not result into the resignation. बिल्कुल सही. So both the statement happens to be correct and hence C is going to be the right answer. So with this we are wrapping up this video as well. Meet you into the next video. Till then, bye bye.